Dear students, today we'll discuss the last most important cell organelle, which is called the master organelle of the cell, is called nucleus. We'll discuss today nucleus. Nucleus is first discovered by Robert Brown in 1831 and in research in orchid cells. Orchid cell रो से discover करके प्रथमे discover करते हैं nucleus, which is the most important organelle of the cell and which controls all metabolic activities, all cellular metabolisms of the cells controlled by nucleus. Then before going to study the nucleus structure and function, first I will tell you some important things about the nucleus. We have to know some important things about nucleus that are first a number. हमें किछि न्यूक्लियस ऊपर किछि धारणा नेबा तापर हम ता स्ट्रक्चर को पढ़िबा. तो नंबर प्रत्येक सेल रे केतरा नंबर रे न्यूक्लियस अछि, केतरा लेखे न्यूक्लियस अछि, केतोडी सेल रे मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट, केतोडी सेल रे गोटिए न्यूक्लियस प्रेजेंट, केतोडी सेल रे न्यूक्लियस एब्सेंट. सो नंबर को नै कि हम देखिबा न्यूक्लियस माने कर नो न्यूक्लियस in some cell nucleus is absent and that is called enucleated. That is called enucleated. For example, mature RBC, C plate, C tube, platelets, ये गुडी करे न्यूक्लियस नाही. मैच्योर्ड आरबीसी रे मामालियन आरबीसी, मैच्योर्ड मामालियन आरबीसी रे न्यूक्लियस इज एब्सेंट. जदि एब्सेंट दैट न्यूक्लियस, दैट सेल इज कॉल्ड enucleated cell. Enucleated cell means nucleus absent. If one nucleus present, that is called uninucleate. And most of the eukaryotic cells are uninucleates. But when two nucleus is present, that is called binucleated cell. For example, paramecium रे दुईटा न्यूक्लिएटेड, गोटे हूँ छोट गोटे बड़. बड़ को कहती मैक्रो न्यूक्लियस और मेगा न्यूक्लियस और मेगा एंड सेंटर कहते माइक्रो न्यूक्लियस. टू न्यूक्लियस बाइन्यूक्लिएटेड. जदि मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट, that is called multinucleated cell. Multinucleated cells. A multinucleated cell को हमें दीटा डिफरेंशिएटर में देखिबा. गोटे कहती सिनोसाइटिक and syncytial. Sinusoids, the term, it is used in plant cells. Plant cells यदि multinucleate ताको sinusoidic कहते. यदि animal cell multinucleate ताको कहते syncytial. Animal cells. But it is not mandatory. Multinucleated cell, plant cell रे multinucleate sinusoidic कहते, animal cell रे multinucleate cell को कहते syncytial multinucleated cells. दिस इज द नंबर को नहीं कि हमें न्यूक्लियस रो विभिन्न नाम जानले. तापर देखिए पोजीशन को नहीं. पोजीशन nucleus
सेल रो केउठर थाए जदि आम प्राय जानिचे जे न्यूक्लियस सेंटर इन एनिमल सेल रे न्यूक्लियस सेंटर रहे जे सेंटर रहिला जे सेंटर रहिबा ताका कहबा सेंट्रिक न्यूक्लियस का कहबा सेंट्रिक एग्जांपल होची एनिमल सेल जदि टिके साइड को रहिला आम जाने प्लांट सेल रे न्यूक्लियस सेंटर न थाए मझे भाक्यूल थाए हाँ न्यूक्लियस टा पुश होता है टू दी वन साइड जब चाहे गोटे साइड को थांती साइड रे थाए ताल तक आम कहबा इसेंट्रिक सेल एग्जांपल प्लांट सेल जो सेंटर रे न्यूक्लियस होची प्रायतः एनिमल सेल रो भाक्यूल्स न थाए छोट भाक्यूल थाए तेणु सेंटर रे न्यूक्लियस थाए तेणु प्लांट सेल रे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज vacuole in center so nucleus is pushed to the one side and that is called eccentric nucleus जदि बेसल का कहबा हमें ना केतोडी सेल रे जोटा कि कॉलमनार सेल रो बेस थाए न्यूक्लियस बेस रे that is called basal nucleus so position को नहीं हमें किसी तथ्य रखले हमें देखियो तापरे शेप को नहीं डिफरेंट शेप रो मध्य न्यूक्लियस अछि डिफरेंट शेप रो न्यूक्लियस जे देखिबा शेप को नहीं देखिबा यदि प्राय तो ऑल सेल न्यूक्लियस आर मोस्टली circular nucleus mostly in most of the cells nucleus is circular but in some cells nucleus is oval shaped example smooth muscle cells is oval shaped and in some cells the nucleus is lobed means bilobed cells bilobed, trilobed and multilobed. Bilobed, trilobed, multilobed. एभली मध्य न्यूक्लियस देखा जाए एमें सर्कुलर ओभाल बाइलोब circular most of the eukaryotic animal cell is circular smooth muscle cell oval bilobed cells and WBC types of acidophilic WBC रे bilobed nucleus and basophil WBC रे trilobed and neutrophil WBC रे multilobed. So these are different types of shape nucleus. Then we'll study the structure of nucleus. Okay? हमें जानले नंबर को नहीं कि कितने न्यूक्लियस अच्छी पोजीशन को नहीं कि न्यूक्लियस टाइप और विभिन्न शेप न्यूक्लियस टाइप. Now we'll study most of the structure of nucleus. Structure of nucleus. The nucleus cell organelle, nucleus cell organelle discovered by Robert Brown, and it is a double membrane bounded cell organelle. And it contains genetic material and controls growth and cellular metabolism.
So it is called master of cell organelles. ए न्यूक्लियस भितरे कौन थाई कंटेंट कौन कहा को नहीं कि स्ट्रक्चर होता है ताको हमें देखिबा ने स्ट्रक्चर न्यूक्लियस को हमें ए सब स्ट्रक्चर रे गठित हमें एगुड को हमें वर्णना करबा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज टू मेम्ब्रेन इनर and outer. This is outer membrane and this is inner membrane, and two membranes are called theca. That is called theca. Nuclear theca, karyotheca ता कोणती karyotheca. A कार्यो नेम न्यूक्लियस रो अन्य नाम होची कार्योन. कार्योन को नहीं क्या में प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक बोले कहउछे कार्योन. तो आउटर मेम्ब्रेन थिका and inner thica consider karyotheca. The nuclear membrane, the outer membrane is stocked with ribosomes. These are the ribosomes. And in some place from the outer membrane, endoplasmic system like endoplasmic reticulum is originated. It is called endoplasmic reticulum. Okay. The space between two membrane, this space that is called perinuclear space. Perinuclear space. And the in between conjugative nuclear membrane, this is pore like structure. This is called nuclear pore. And this nuclear pore consists of many different types of proteins, nucleoporins proteins, and this act as a channel to movement of the materials, macromaterials between the nucleoplasma and the cytoplasma. And this karyotheca separates the cytoplasma and nucleoplasma. Nucleus भीतर जो fluid like structure ता कोणती nucleoplasma. And in outside nucleus cell एटा cell nucleus तो ए चले एटा रहबो हमें cytoplasma. So a karyotheca separates the cytoplasma and nucleoplasma, and in between nucleus some threads like structures present, and this is the genetic material which are inherited from parents to offspring, that is called chromatin fibers containing DNA, consists of DNA. Okay, so nuclear membrane is bilayer, outer and inner. The space between two layers is called perinuclear space and it's called karyotheca. Nuclear membrane separates the cytoplasma and nucleoplasma, and it prevents the macromolecules. ये macromolecule को prevent करते हैं, entry करने पे prevent करता है. And nuclear pores are acted as a channel to passage the different materials from cytoplasm to nucleoplasm, nucleoplasm to cytoplasma. And nuclear lamina in inner layer, and some layer is present, that is called continuously layer is present, that is called lamina, nuclear lamina, and this is called nuclear lamina, that gives mechanical support. Nuclear lamina gives the mechanical support. So a nuclear pore diameter, that is 800 angstrom, and the number of nuclear pore in nucleus, kete number of nuclear pore thai, it ranges from 1000 to 10,000. It ranges from
1000 to 10,000 according to function of the nucleus of in different cells. So diameter is 800 angstrom and number is nuclear pore number होची 1000 ରୁ 10000 को सेल रो न्यूक्लियस रो भेरी करिथा according to function of the nucleus. एवं ए न्यूक्लियस टा पिलाने ए जो चैनल ए भली देखा जायनी एक्चुअली ये कोन थाए ना रिंग लाइक स्ट्रक्चर थाए न गोटी देखि दोछि खाली रिंग लाइक स्ट्रक्चर थाए एमदी रिंग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड annulus and it था एडी पैसेज थाए. सो ये 800 एंगस्ट्रॉम रो पूर्ण थिकनिंग हेई थाए ये 200 एंगस्ट्रॉम रो बैटर थाए चैनल थाए और सेटी कंटेन्स मेनी proteins act as a channel protein that is called nucleoporins proteins that helps to movement of different materials from nucleoplasm to cytoplasm and cytoplasm to nucleoplasm. This is nuclear membrane and nucleopore. The nucleoplasm, the fluid-like structure bounded by the karyotheca, and that fluid-like structure equal to nucleoplasma. That is called nucleoplasma that contains many enzymes. कौन एंजाइम्स होई था ना many enzymes that is called DNA polymerase enzyme helps in replication, RNA polymerase enzyme that helps in transcription, and आउ न्यूक्लियोप्लाज्मा कौन था विभिन्न एंजाइम था ता सहित यार पीएच केते था ना 7.4 स्लाइटली अल्कालाइन and mRNA, rRNA and tRNA also present. So nucleoplasm is a fluid-like structure containing different enzymes which helps in DNA polymerase enzyme रहता है जाके replication replication means to form the own copy. So it is done in interphase cells S phase interphase cells हम cell division पढ़ले हम जानेगा inter cell cycle रो interphase रो S phase रे replication काम होता है तो जो enzyme गुड को दरकार रहता है एक न्यूक्लियोप्लाज्मा भीतर था तो DNA polymerase enzyme helps in replication present in nucleoplasm, RNA polymerase transcription DNA रो information DNA mRNA synthesis करिवा प्रक्रिया को कहा जाए ट्रांसक्रिप्शन. यही प्रक्रिया पे जो एंजाइम दरकार रहता है RNA polymerase enzyme that is also present in nucleoplasma, and the fluid of the nucleoplasma is slightly alkaline due to pH. Its pH is 7.4, and mRNA, rRNA and tRNA all are present in nucleoplasma. So this is about nucleoplasma. Then we'll go to nucleolus.